In this video we will discuss some of the numericals related to the voids, but just heading towards void we must learn the number of atoms in each type of packing. For example, if it is simple closed packing, the atoms present at the corners, so there are total 8 corners and the contribution at each corner is 1/8 because it is shared by the 8 unit cells here. So contribution 1/8 into 8 comes out to be 1 in case of simple cube. When it is a body centered, which means at the corner as well as at the body center atom is present, so contribution will be the 2. When it is a face centered, which means in addition to corner each face is occupied, so total 6 face, each contributed 1/2, so contribution will be 3, total become 4. So the maximum space is occupied by the face centered and which is to be 74%. Then less number of atom present, less than that of face center is in BCC, so its contribution will be 68%. 68 is the packing efficiency, and least space occupied in case of simple cubic, which comes out to be 52.4%. So this is the, we can say, packed space. If we discuss about which one have the maximum empty space, then simple will have the maximum empty space. So minus this value from 100 we get the empty space. So in this case we get the 48, near about 48%. In this case we get the 32%, and in this case the empty space is 26%. So one of the MCQ can be framed on the topic number of atoms, second on its packing efficiency, third on the empty space. Or just for example, you are given a ratio of 4:1:2. So what is the order here? It is for the FCC, this one is for the simple, and this one is for the BCC. So it can be framed in any of the way, or arrange them in increasing order of their empty space, so which means FCC less than BCC and then the simple cubic. Now the next type of a question is based on the coordination number. This is a one dimension linear structure where one atom is at one time is joining with two other atoms, so coordination number be 2 for the one dimension. When we have packing in a two dimension, then we have two types of a packing: square closed packing, where one layer just below the another layer, whereas in the hexagonal closed packing, one layer is second layer is just at the, we can say, this depression, just lie below this depression, not exactly below the atom but below the depression point. So in this case one atom at the same time is joining to the 4 atom, so the coordination number will be 4 here, whereas in this case this atom at the same time are in contact with 6 atoms, so coordination number will be the 6. Now the question which is framed from this topic is, an example will be given to you and you have to answer which of the following option have a coordination number 6 or have a rock salt like coordination number. So rock salt possess coordination number 6, which means at the single atom is surrounded by the 6 ions, which means each Na is surrounded by the 6 Cl. So in the similar way, NaCl type structure is for NaBr, KBr, CaO, AgCl, calcium sulfide and MnO. Similarly, when it is a coordination number 4, so it is called as a ZNS type structure. So what will be the example for that? CuCl, CuBr, CuI and HgS. So you have to learn all these examples because they can be framed in any question. Next is the 3 dimension in case of square close or in case of hexagonal, both having the coordination number 12. Now the next important topic is the void. So first of all, there are two types of a void. One is a tetrahedral and the octahedral. Now how tetrahedral is formed? Just for example 1 2 3 4 atoms and in between there is a void, so it is a tetrahedral void. आपने एक लेयर लिया, ठीक है, ये एक लेयर थी 2 डायमेंशन में, और आपने थर्ड जो लेयर रखी वो जस्ट इस वॉइड के ऊपर रखी, तो अब जो ये वॉइड है ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है. इन द सिमिलर वे अभी अगर मैं इसी को आगे ऐसे और फ्रेम कर देती, और अब ये जैसा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, अब इससे अपोजिट एक ट्रायंगल मैंने ऊपर रखा, तो दिस इज़ 1 2 3 ट्रायंगल. अब मैंने यहाँ पे ये 1 और ये नीचे की तरफ एक और रखा, तो अब यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस हुआ, वॉइड हुआ, इसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब इससे रिलेटेड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है. इफ़
इफ़ अ अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, उसमें जितने भी n पार्टिकल्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल उतने ही होंगे. इफ देर इज n पार्टिकल्स देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी n, वेयर एज टेट्राहेड्रल विल ट्वाइस दैट ऑफ द नंबर. सो फर्स्ट वन इज द n is the number of particles, n is the octahedral void, then the tetrahedral will be twice that of octahedral. तो अगर 4 atoms हैं तो octahedral void भी 4 होंगे और tetrahedral void कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. Now just here is a question. A compound formed by element P, Q has a cubic structure in which P atoms are at the corner. So if atom is at the corner, so its contribution will be 1 by 8. So 8 into 1 by 8 comes out to be, P comes out to be 1. And Q atoms are at the face center. Now Q atoms are at face center and we know that the contribution of from the each phase is 1 by 2 and there are total 6 phases. So 3. So here formula will be PQ3. Similarly, the next type of a question is a cubic solid is made up of 2 elements A and B, atoms of B present at the corners. So B if present at the corner, so its contribution will be 1. So B comes out to be 1. And A is also at the body center और body center का भी contribution 1 होता है, तो दोनों का ही contribution 1 1 हुआ. So what will be the formula in this case? 1:1. So answer will be B here, AB. Now the next type of a question related from the void is here, that is what is the formula of a compound in which of the element Y forms CCP lattice and atoms X occupy 2/3 of the octahedral void. Now what is the question here? Y forms CCP, which means the total number of atom is similar as that of FCC, which comes out to be 4. So in this case N comes out to be 4. This is the first point which is clear from that. The second point is X occupy 2/3 of the octahedral void and we know that octahedral void is equal to the number of atoms. So what is the number of atoms here? 4. So which means 4 octahedral voids are there. But out of these 4 only 2/3 is occupied and it is occupied by X. So for X it is equal to octahedral voids, which is equal to n, which is further equal to 4 into 2. Answer comes out to be 8/3. Now if we have to form a compound from X is to Y, what will be the formula for that? So as we know, the contribution of Y here is 4 because it is in the CCP unit. And what is the contribution of X here? 8/3. So it will be 8:12. So further it comes out to be 4 to the 8, 4 to the 12, 2:3. So formula comes out to be X2Y3. ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें. क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? What is the formula of a compound in which element Y form CCP? तो जहाँ पे भी CCP लिखा है which is equal to FCC, तो यहाँ पे number of atoms 4 होंगे. Occupy 2/3, तो Y आपका 4 आ गया, ये तो कंफर्म हो गया. ठीक है, यहाँ पे Y आपका 4 आ गया इस फॉर्मूले में, यहाँ से ये कंफर्म हो गया. और सेकेंड पॉइंट X जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है और हमें पता है ऑक्टाहेड्रल n नंबर होता है, n हमारा 4 है तो 4 यहाँ आ गया, पर कितना ऑक्यूपाई हो रहा है वो 2/3 हो रहा है तो 8/3 आ गया. बाय सॉल्विंग वी गेट दिस फार्मूला. अब देखिए अगला ही फार्मूला, सेम अगला क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न पे, बट अभी ऑक्टाहेड्रल ना लिख के टेट्राहेड्रल X ऑक्यूपाई कर रहा है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड Y फॉर्म अगेन CCP? तो Y अगर CCP कर रहा है तो विच मीन्स फॉर Y n इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये कंफर्म हो गया. ठीक है, देन एंड एटम्स 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल. अब क्वेश्चन चेंज कहाँ है? एटम X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस केस में? हमें ये पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल होते हैं ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो 2n हो गया. अब 2n यहाँ क्या है? 4, तो 2 into 4 8 हो गया. बट इसमें से सिर्फ कितने ऑक्यूपाइड हैं? 1/3. तो ये फॉर्मूला हो गया. अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 8:3. दिस इज़ फॉर x वैल्यू आई 8/3. फॉर y इट इज़ 4. तो अगेन मैं x इज़ टू y अगर लिखती हूँ तो इट इज़ 8/3:4, 8:12 और 4 2:3. तो अगेन फार्मूला कम्स आउट टू बी X2Y3.
तो पॉइंट क्या है जो इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो वो कौन सा लैटिस है जिससे हमें नंबर ऑफ़ एटम्स पता चल जाएंगे, वो एक की वैल्यू आ गई नंबर ऑफ़ एटम्स की। अब दूसरा या तो ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा। ऑक्टा है तो हमें n ही लेना है। अब कितने % ऑक्यूपाई है उससे हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका क्या है, ठीक है। अ कंपाउंड फॉर्म बाय कटायन C, कटायन इज C, ठीक है, एंड अनायन A, अनायन यहाँ पे A है, ठीक है। अनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, and the next point is the anion form the hexagonal close packing HCP. HCP stands that there is 6, so total number of atoms, so number of atoms comes out to be 6 here. And cation occupy, now this cation occupies 75% of the octahedral void, and as we know, so if the number of atoms are 6, so octahedral voids are also the same, that is it is also 6 here, but only 75% of this is occupied. Now 6 into 75%, we can convert it, or it is simple, just 25 3 by 4, 3 by 4th of the octahedral is occupied, so it comes out to be 18 by 4 here. So if we have to find out the formula for C is to A, for the C its value is 18 by 4, for A its value is 6, so 18 is to 24, 6 3 the 18, 6 4 का 24, so formula will be C3A4 here, ठीक है, C3A4, that is B option is here. तो मीनिंग ये है कि क्वेश्चन कैसा भी है, पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने गिवन है। नंबर ऑफ़ एटम्स के बाद एक पॉइंट जो अगला क्लियर होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे उतने ही होगा, और टेट्राहेड्रल उसका ट्वाइस हो जाएगा। इसी फंडे को किसी भी तरीके से, चाहे % में पूछा जाए चाहे कैसे पूछा जाए, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।